सेल डिवीजन को डिस्कस करने से पहले आपसे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूंगी। दो तरीकों से ग्रोथ होती है। एक तो ये किसी भी चीज में सेल के साइज का बड़ा हो जाना, दूसरा ये कि सेल की तादाद बढ़ जाए, मतलब सेल मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए और उतना ही ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा होता जाएगा। ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, बेसिकली उनमें सेल ग्रो करते हैं। दूसरी चीज लिविंग थिंग रिजेम्बलेंस है, वो अपने वालिदैन से मिलते जुलते हैं। आइए सेल डिवीजन को समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। We'll define cell division as a process by which a cell divides into two daughter cells. The cell which divides are called parent cell. The cell which divide is called parent cell, and the cell which are produced as a result of cell division are called daughter cell. यहां मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जो टर्मिनोलॉजी इसमें बताई गई है, एक तो पेरेंट सेल की, कुछ जगह पे आप उसको मदर सेल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। मदर सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। सेल डिवाइड होने से पहले एक रेस्टिंग फेज में होता है जिसको हम इंटरफेज कहते हैं। और इस इंटरफेज में वो क्या कर रहा होता है, बेसिकली जो उसका डीएनए है, जो उसके क्रोमोसोम्स हैं, वो क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो रहे होते। उसके कौन सा मटेरियल, अच्छा यहां एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे कर लूं, मुझे बताइए, अभी आपने पीछे एनिमेशन भी देखी है, क्रोमोसोम सेल के किस हिस्से में होते हैं? जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इंटरफेज में सेल क्या कर रहा होता है? सेल अपने क्रोमोसोम्स को, डीएनए को मल्टीप्लाई कर रहा होता है, क्योंकि आगे उसने 1 से 2 में बनाना है, तो उसकी क्वांटिटी पूरी रखने के लिए उसको क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट किया जाता है। डुप्लीकेट का मतलब है वैसे ही और बना लिए जाते हैं। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। वेरी नाइस। उम्मीद है कि आपको बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होंगी। अब हम माइटोसिस और मियोसिस के बारे में एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं और उनके डिफरेंसेस को समझते हैं। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की दो टाइप्स हैं, नंबर 1 माइटोसिस एंड नंबर 2 मियोसिस। व्हाट इज माइटोसिस? डिफाइन माइटोसिस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which a parent cell divides into two daughter cells with same number of chromosome as in parent cell. यानी माइटोसिस एक ऐसी किस्म है सेल डिवीजन की जिसमें जो एक पेरेंट सेल जब 1 से 2 में डिवाइड होगा तो उन दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो किस तरह क्रोमोसोम 1 से 2 में डिवाइड हो रहे हैं। तो पहले स्टेज में न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और दूसरे स्टेज में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। सेल डिवीजन की दूसरी किस्म मियोसिस कहलाती है। ठीक, मियोसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्क्रीन पे देखिए। मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स in such a way
that the number of chromosome in each daughter cell is reduced to half. फ्रेंड्स इसको समझते हैं। माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है? ये टेबल आपके सामने है, आपकी बुक में दिया हुआ है। माइटोसिस और मियोसिस में पहला डिफरेंस है कि 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस इन माइटोसिस, जैसा आपने देखा 1 से 2 में है, कन्वर्ट होते हैं, और मियोसिस में 1 से 4 सेल्स में फॉर्मेशन होती है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम इन डॉटर सेल्स एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल, यानी जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है उतना ही डॉटर सेल में होगा। मियोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूसेस टू हाफ। तीसरा डिफरेंस क्या है कि इट अकर्स इन जनरल बॉडी सेल्स, यानी जिसको हम एक अदर वर्ड्स में अपने टीचर से कहिएगा, वो आपको बताएं सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो जिस्म के, हमारे स्किन के सेल्स हैं, हमारे लिवर के सेल्स हैं, अगर ये ग्रो करेंगे तो ये माइटोसिस के थ्रू ग्रो करेंगे। जबकि मियोसिस अकर्स टू प्रोड्यूस गैमीट्स, यानी स्पर्म और एग इन एनिमल्स और स्पोर्स इन प्लांट्स। ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होती है। माइटोसिस में ओनली 1 डिवीजन टेक्स प्लेस और मियोसिस में 2 डिवीजन्स टेक्स। अब हम इसी टॉपिक से मुतालिक एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखते हैं। अब हम एक और एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन देखते हैं। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी और आप इस काबिल होंगे कि माइटोसिस और मियोसिस में फर्क बयान कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और घरों में महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज। मेरा नाम किंदा है। मेरी दोस्त आयशा काफी दिन से स्कूल ही नहीं आ रही। उसे मिलने गई तो पता चला वो बहुत बीमार है, उसे डेंगू हो गया है। डेंगू के अहम अलामात जिस्म पर लाल निशान, मतली होना, जिस्म में दर्द। मैंने और मेरे दोस्तों ने फैसला किया कि हम अपने किसी भी दोस्त को डेंगू नहीं होने देंगे। हमने सबसे पहले अपने घर में छोटी छोटी जगहों पर इकट्ठा हुआ पानी दाया किया। खुले हुए पानी को ढांपा। जो लोग खुले फिजा में सोते हैं उनको मच्छरदानियां फराहम की। जिस्म को ढांपने के लिए पूरे आस्तीनों वाले कपड़े पहने। मच्छर मार लोशन लगाना शुरू कर दिया और हमने डेंगू से बचने का पैगाम अपने मोहल्ले में भी फैलाया। आओ मिलकर करें डेंगू का खात्मा। Women provide many gifts and talents that the world desperately needs. For many centuries, women were forced to take on inferior roles until women like Marie Curie proved that women could perform just as well or better in positions which had previously been only available to men. Marie was born in Poland almost 150 years ago. She was the youngest of 5. Her father was a science professor and her mother directed a women's school. Her childhood was difficult because Poland at that time was controlled by the Russian military. Violence and revolts often erupted in the streets, so Marie rarely left her house and for a long time barely attended school. Marie had an endless desire to read and learn as often as possible. She read perfectly at the age of 4 and was curious about language, math, and many topics that other children found boring. She secretly began to go to school, and it soon became obvious to everyone that she was a brilliant girl with a passion for learning. Her determination quickly led her to finish at the top of the class. After her mother and one of her sisters died of tuberculosis, she focused her studies and became a governess to help pay for her sister Bronia to study in France. Marie was not only intelligent, she was extremely generous and kind. After 5 years of combining studies and work, she decided it was time to go to university in Paris because it was not possible for women to attend university in her country. So she packed her bags and left home in search of a better future.
Marie showed great merit and aptitude in her studies. She earned full math and physics degrees in only 3 short years, graduating with the highest grades in her class. University was a special place for Marie. Not only did she earn high honors, she also met Pierre, a young man who would eventually become her husband. After marrying, Marie and Pierre started a family. Having a family didn't stop her from pouring herself into her profession, her other passion. Pierre and Marie were a united front and worked together to build both family and careers. Marie was a mother, wife, and an exemplary scientist. Pierre was also a physicist, like Marie, and they decided to work together. Marie took on the role of head scientist, and Pierre was her faithful assistant. Through hard work and dedication, the couple achieved important scientific discoveries, all within the walls of a simple shed. They discovered elements in nature that emit light and heat up without burning up. They found that carbon releases energy when burning, but after it is no longer carbon. The couple worked hard investigating elements such as polonium and radium, which release energy that they called radioactivity. This discovery had such enormous uses and applications that they earned the highest award possible for any physicist, the Nobel Prize. As their work was recognized throughout the world, they became extremely important scientists. Marie and Pierre were happy, but their work was not finished. They kept up research in order to contribute as much as possible to the sciences and humanities. One dark, rainy day, Pierre was walking along the street when a horse and carriage came racing by. Just as he realized and tried to dash out of the way, he slipped and got run over. The accident was so serious that doctors could not save his life. Marie was sad, but she was a strong and brave woman. She continued researching and caring for her daughters, and even took on some of her husband's teaching duties at the university. This was how Marie became the first woman in the world to teach at a university level. Many shocked students, professors, and onlookers crowded into her first class to witness wisdom. Everyone admired and respected her. Marie didn't enjoy her fame, but she loved her work. She kept investigating and performing new, important experiments until soon thereafter she was awarded the Nobel Prize in Chemistry. She became the first woman and the first person at the time to be awarded 2 Nobel Prizes in science. The whole world admired and watched, waiting to learn more from her.
When World War I began, her life changed drastically. She left her research and the university to go help the wounded. Thanks to her inventions, she was able to create a mobile X-ray unit to help doctors in the field, saving thousands of French lives. Slowly, Marie's health began to decline. No one knew why, not even Marie. Was it bad luck? Or was her poor health connected to the work she had been doing? Her illness slowly progressed. She felt fatigued and weak, and her vision declined. Burns developed on her body. In 1934, the world lost one of the most important women in history. Marie Curie died of what doctors at the time considered a mysterious disease. They couldn't explain her cause of death. Aha! After Marie passed away, scientists discovered that radioactivity had caused her death. It is very dangerous for human beings, and Marie had spent a large portion of her life researching radioactive elements without any protection. Marie was buried next to her husband in a cemetery outside of Paris. In 1995, the President of France ordered her remains to be moved to the Pantheon in Paris, where the most distinguished French people are laid to rest. The President delivered these words in the ceremonial speech. Marie was the first French woman to be a doctor of sciences, Sorbonne professor, and recipient of a Nobel Prize. Now she is the first woman to be entombed in the Pantheon of Paris on her own merits. The President delivered these words in the ceremonial speech. Marie was the first French woman to be a doctor of sciences, Sorbonne professor, and recipient of a Nobel Prize. Now she is the first woman to be entombed in the Pantheon of Paris on her own merits. Marie Curie had achieved the distinction of higher knowledge and showed that women are just as brave and capable as men. Thanks to her, many women have succeeded despite great opposition and achieved high honors proving bravery, efforts, and skills. I am among those who think that science has great beauty. A scientist in his laboratory is not only a technician, he is also a child placed before natural phenomena which impress him as if they were fairy tales. Marie Curie, 1867-1934. Madame Curie is, of all celebrated beings, the only one who fame has not corrupted. Albert Einstein.